All right. Thank you so much all to joining my Insta live. Let me introduce myself first. Well, my name is Arpita Chatterjee, and I have started my career at the age of 19 years, and with a very low profile, like telecaller, receptionist, and all. But now I'm working as a business head. So this 20 years of journey was phenomenal, like lots of ups and downs. So I thought that why not I share my all wisdom to others. For that, I had taken a proper training for last 2.5 years, and now I become a certified mindset and life coach. And today I've invited a very talented and very beautiful, and she's a very famous like life coach, and also she is an author. So welcome, Aarti. Thank you so much for joining me. I'd like to know more about you. Please tell me something more about you, about your journey. And I know you're doing phenomenal work. Please share with everyone about you. Hello, everyone. Very warm welcome to this amazing Insta Live. Myself, Aarti Chatterjee, life and a relationship coach, author of the book Rebuild Relationships. I like the relationship. This topic is very like deep core, very close to my heart. Okay, so like relationship is something that is uh, ongoing. It's an ongoing journey. Okay, you have to be like present in every moment of it, and you have to enjoy every relationship. It can be any relationship, like parent children relationship, or like partner relationship, any relationship. It's a journey. You have like you on go on that journey, and you learn, and then you like apply something from that, and to like you can raise that relationship to the next level. And it's like you are nurturing a plant. True. Very well said. And at the end, that all the relationship equation is different, right? Today Yeah, we are yeah, of covering course. a very, very, very sensitive relation, that is mother-in-law. Especially, I know that most of the, women, like married women, and they feel somewhere they have felt challenge the relationship with mother-in-law. Even if we have seen a lot of TV serials also, they are Yeah. portraying mother-in-law as a villain, but it's not like they are villain according to me. But I feel that they are very insecure because they have very protective towards their son, and that's why they feel that someone else will not take that that position. Yeah. So I believe that what you feel, because you are a relationship coach, so what do you feel, what is the root cause of this kind of insecurity and this kind of toughness that all the daughter-in-law is facing with the mother-in-laws? See, first of all, I'll tell you that it's the mindset. Okay, अगर हम ये सोचते हैं कि वो मेरी मदर इन लॉ है, तो इट इज वी आर सेटिंग सम पर्सपेक्टिव इन आवर माइंड कि वो मेरी मदर इन लॉ है, शी कैन नॉट बी माई मदर. इफ दिस इज योर पर्सपेक्टिव, देन लेट मी बी वेरी क्लियर कि आप हमेशा कितनी भी कोशिश कर लो, यू विल प्रिटेंड हर एज अ मदर इन लॉ, right? True. So I'll firstly, you have to accept that she is my mother. Okay, I know there are some people who will not agree to this point, but let me be very clear to you. ठीक है, आप अपनी मॉम को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी से भी, बट अंडरस्टैंड द पर्सन यू आर इन लव विथ, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, दैट इज योर स्पाउस, या फिर इफ इट्स फॉर गाइज इट्स फॉर योर वाइफ. तो आप उनकी मदर को डिसरेस्पेक्ट करोगे, of course you are hurting them by doing that, right? तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचो कि आई एम हर्टिंग द पर्सन who is very close to my partner, True. right? So understand this thing that you cannot take apart this parenthood from them. True. Okay, so first of all accept that she is as good as my mother. Okay, see, I'll not say that every mother-in-law will be good or every mother-in-law will be bad. Okay, so you have to understand कि ठीक है, कुछ टाइम लगेगा हम दोनों को सॉर्ट आउट होने में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिट and understand
कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है, ऐसा क्या हम दोनों के बीच हो रहा है जो बैलेंस नहीं हो रहा है, जिस वजह से हमारी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट पावर ऑफ डायनामिक्स और अथॉरिटीज, इट इज इन हर, ठीक है? ऑफ कोर्स वो बड़े हैं, ठीक है, तो उनके अंदर एक पावर है, राइट? आप बोलोगे कि हम बाउंड्री सेट कर सकते हैं, राइट? बट ऑफ कोर्स यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, बट हायर अथॉरिटीज से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, राइट? यू कैन नॉट हैव दैट हार्ड कोर बाउंड्रीज फॉर देम. So first thing I'll highly recommend that understand that they are, you are coming in the lower hierarchy of their house, ठीक है? जो हायरार्की होती है इन लॉज की, तो वो हायरार्की में सबसे लास्ट बॉटम पे आती है डॉटर इन लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, ठीक है? तो आप हमेशा ये सोचोगे कि मैं हायर अथॉरिटी से लाइक थोड़ा सा ऐसे पंगा कर लूं, it will hurt you, it will hurt your partner, it will hurt them. So rather hurting everyone, I'll say understand that they are like authority person, okay? So understand that they are talking because जो उनके साइड से उन्होंने देखा है वो अपने एक्सपीरियंस से उतनी ही बात कर सकते हैं. दे कैन नॉट गो अहेड विद दैट, राइट? बिकॉज कल्चरल एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस होती है, ठीक है? अभी मेरी मदर इन लॉ ने सपोज मुझे बोला कि आप ये कल्चरल फंक्शन है, आप चलो, ओके? सो मुझे बैठना पड़ेगा उनके साथ ये बोल के कि ओके ममा आज मुझे कहीं जाना है एंड वहां जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द कम्युनिकेशन हेल्ड बिटवीन यू एंड योर मदर इन लॉ, ओके? सो दे विल ऑलवेज टेल यू कि कल्चरल है, ये फंक्शन में जाना इंपॉर्टेंट है, वो फंक्शन में जाना इंपॉर्टेंट है, या फिर लाइक सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती है, अरे इसकी बहू नहीं आई है, अरे उसकी बहू ने तो ऐसे किया. सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर रूल्स एप्लीकेबल टू यू and what you can expect, what is not expected. So understand that and have the clear communication. So first thing is understand the power dynamics and the authority person she is. Second thing I'll say, the cultural and the social expectations will be always there. और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी कि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छा ये करना है तो क्यों करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट. अगर आपको लगता है कि मुझे करना है तो आस्क देम व्हाई आई नीड टू डू दैट. अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा व्हाट वाज द नेसेसरी थिंग, मुझे वो चीज क्यों बोली गई थी, ओके? एंड थर्ड थिंग आई विल से, डिफरेंट बैकग्राउंड एंड डिफरेंट अपब्रिंगिंग्स होती है, राइट? अभी मेरी फैमिली में जो रूल्स रेगुलेशंस है वो आपकी फैमिली में नहीं होंगे, आपकी फैमिली में है वो मेरी फैमिली में डिफर करेंगे. देयर आर टू डिफरेंट फैमिलीज. अ मैरिज इज समथिंग that is the marriage of not the two person, it is the marriage of two cultures, two different families with the different upbringings, with the different thoughts, processes, with the different rules and regulations at their home. True. Okay, so you have to understand कि अभी मेरी मदर इन लॉ ने क्या उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रखे थे, वो सेम रेस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर रखना चाहती हैं. Why? Because उनकी अपब्रिंगिंग वैसी थी. बट नाउ प्लीज हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो चीज वो मेरे पे एप्लीकेबल कर रहे हैं तो अप टू सम एक्सटेंट आई कैन, ठीक है, एक्सेप्ट इट. बट देयर आर सम टाइम्स हम वो लाइक लगता है कि ये क्यों कर जरूरी है, तो उस टाइम पे हम दोनों की क्लैशेस होगी, तो हम दोनों के एक्सपीरियंस डिफरेंट होंगे, हम दोनों के एक्सेप्टेंस डिफरेंट होंगे, हम दोनों की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होगी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर मेरे को वो चीज बोली जा रही है तो इट इज नॉट देयर कि वो रॉन्ग इंटेंशन से बोल रहे हैं. एवरी टाइम देयर कैन नॉट बी अ रॉन्ग लाइक रॉन्ग इंटेंशंस. वो लाइफ, वो वैल्यूज, वो एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं.
और वो चीजों की वजह से कभी कभी हमको लगता है कि नो शी इज रॉन्ग, शी इज रॉन्ग। मतलब आज हम हर चीज में अपना प्रूफ लगाने में होते, नो मैं ही सही हूँ, ऐसे नहीं हो सकता है। ego. तो अंडरस्टैंड दैट कि there are different kinds of people, there are different thoughts, there are different processes, and the emotional attachment is there। ठीक है, वो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है अपने बच्चों के साथ। ठीक है, एज लाइक मदर इन लॉ का होगा अपने सन से, लाइक विथ योर पार्टनर, तो वो उनका एक हमेशा अंदर से ऐसे इमोशनल साइड होगा जो बोलेगा तो हमेशा अपनी वाइफ की सुनता है, तो मेरी कभी सुनता ही नहीं है। गाइज लाइक एक मेल के लिए भी उतनी ही प्रॉब्लम होती है जितनी वुमेन के लिए होती है, because he has to always juggle between the wife and her mom। True. Very well said, Aarti. And I know I can share this thing with my own personal experience also, because when I was got married, my friends, my sisters, everyone has said one thing ki sasu ma kabhi maa nahi ban sakti. And that actually it goes to my mind very deeply that mother-in-law never been like a mother, and that is I absolutely agree with you. That's all about mindset. Like for example, I'll tell you my own story. Like our lifestyle is totally different. My father was very strict, routine. Like we have a disciplined life. We like by 8 p.m. we are taking our dinner, morning, everything was like very routine. But when I got married, it's a very different lifestyle. They are taking food at 11:30 p.m. So they are totally different person. And because because I have this kind of mindset that time that mother-in-law never be my mother, they will never understand. So for 1 year completely I have tried. I've just spoiled my life because I have just doing compromising, like chalo na nahi bol sakti, I can't say no, and people pleasing and all that thing. But when I felt that no, ab mujhse nahi hoga, and when I shared, and you don't believe, they all said that अब क्यों बोल रही हो, पहले क्यों नहीं बोला, why you have suffered so much. So then I realized that no, they are not like that. Actually, most of the time, because of our own mindset, we never accepting. That is very, very true, because we have to accept the person as he is. And you very well said, because they are very protective for their, son. And second thing, of course, you are rightly said, because they have experienced a lot of things. Like if I take my example of my mother-in-law, she was in a joint family. वो 70 रोटियां बनाती थी, like एक time पे. So she has actually done a lot of things for their family. So somewhere maybe कुछ तो फर्क पड़ेगा ना psychological की, that they feel like she is working, she is independent, everyone is like pampering and all. So she felt bad. So obviously that kind of insecurities comes naturally. So it's not like she is wrong or she is bad, but because of our own mindset, we make them in a different picture. That I believe that we need to change our mindset. But at the same time, Aarti, what I feel that actually I have seen with a lot of my friends that few mother-in-law specifically are extremely toxic also. Because toxic in the sense there are too much of interference I have seen, right? So like they interfere there about their son and daughter-in-law's life too much. Like I have like one of my friends has shared that कि उनके लड़के की wardrobe भी अभी तक अपनी mother-in-law अपने पास रखती है, and they are like very protective. So how to deal with so much of toxic mother-in-law? Maybe the good mother-in-law, of course, it's right, we have to change the mindset. But how to deal with toxic people, like toxic mother-in-law who interfere so much and who always criticize and all that? I have seen a lot of, actually they are facing problems. So what suggestion you can give to, advice you can give to them? Let me relate the story to mine, okay? I have been into a toxic relationship for so long and I couldn't stand up for myself, okay? And like I used to be like every time trying कि मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, like I tried each and everything. But when it comes to your mother-in-law, like हमेशा मैं ऊपर पहुंच के again I used to feel down and I couldn't understand what is the problem. Okay, I like वो toxic relationship ही था, okay? That was like every day it is spoiling and you reach at point you say enough is enough, right? तो आपको
आपको पता है कि देर आर सम पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे लोग भी हैं. ओके, आई विल नॉट से दैट एवरी पर्सन इज लाइक दैट, या ऐसे लोग नहीं होते. देर इज लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. ओके, तो मैं ऐसे बोलूंगी कि अगर आपको इम्प्रूव करना है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी वेरी ओपन इन द कम्युनिकेशन. जो चीज आपको अच्छी लगती है, यू से ओके आई लाइक दिस. जो आपको चीज नहीं लगती है, यू हैव टू से नो ऑन स्पॉट. Okay, like True. I relate my one example. One day, like my mother-in-law took some like dress from my wardrobe, okay, without Okay. asking me, without taking Okay. my permission. She opened Okay. it and she took that, and she is like कि मुझे वो चीज अच्छी लगी, and मुझे ऐसा लगा कि वो चीज मैं मेरी डॉटर को दूं. So Oh. उन्होंने वो चीज उसको दे दी विदाउट आस्किंग माई परमिशन, विदाउट आस्किंग मी कि मैं वॉलड्रॉप खोल भी सकती हूँ, या फिर मैं वो चीज ले सकती हूँ, या मैं वो चीज दे सकती हूँ. देयर वर इनफ permissions to be asked. Yes. I'll not use the permission word. At least I'll say, can you ask that? इतना हो सकता था, right? But True. she didn't bother. And वो मैं एक बार चुप रही, and the same thing happened the next time. Okay. Oh. So same thing happened to some other scenario, and second time I also let it pass. Third time I also let it pass, and then I asked my husband that ऐसे क्यों? Then my inner critic, my inner voice asked me कि जब उन्होंने first time किया था, did you had the guts to stop? True. और वो मुझे वो चीज इतनी अंदर से पिंच हो गई कि अगर मैंने एक बार में वो चीज क्लियर कर दी होती तो इट वुड नॉट गो, द रिपीटिव लूप नहीं बनते. Exactly. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्ट योर ओन पर्सपेक्टिव कि आपका पर्सपेक्टिव इस चीज को लेके क्या है. Right. ओके, कि अगर मम्मा आपके कबर्ड से मैं कोई चीज ले लूं बिना पूछे, तो विल यू बी ओके विद दैट? आपको True. अच्छा लगेगा? अंडरस्टैंड, True. communicate openly and respectfully. Second thing, you have to communicate, because वो चीज जब तक आप बताओगे नहीं, जब तक आप उनके आगे वो चीज रखोगे नहीं, तो वो भगवान नहीं है कि वो खुद ही समझ जाएंगे. सो रेस्पेक्टफुली, आई एम नॉट टेलिंग यू कि जाके डिसरेस्पेक्टफुली जाके उनको कुछ बोलो, कुछ गलत बोलो. नो, you have to see boundaries can be formed very firmly and politely. True. Right. Third thing I'll say, show the appreciation and respect, because see उनको है ना, उनके टाइम पे कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, भले वो इतनी हमसे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते थे. True. हम गिनी चुनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, हम आधे से ज्यादा मेड्स पे डिपेंडेंट होते हैं. True. बट उनके टाइम पे उनको इतनी फ्रीडम, इतना ओपननेस, इतना लाइक रिस्पॉन्सिबल, इतनी ज्यादा वो लोग होते थे कि उनको अपने लिए अपने आप को देखने का भी टाइम नहीं होता. सो True. अगर आप उनको थोड़ी सी अप्रिसिएशन दोगे ना, तो दे विल बी लाइक, अरे तूने ऐसे बोला, अच्छा, ओ मेरे को तो आज तक ऐसे किसी ने बोला ही नहीं. शो सम, आई एम टेलिंग यू, फेक करने के लिए नहीं, आई एम टेलिंग यू शो सम genuine care, genuine appreciation दो उनको. Nothing else. They don't require anything. और respect, why? First of all, they are elders. You have to respect it. Second thing, उनको है ना, उनके काम के लिए भी respect नहीं मिलती थी. True. Right? True. उनके husbands भी उनको इतनी respect नहीं देते थे. वो सोचते थे ठीक है ना, बीवी है तो है, क्या हुआ? This was the way of hierarchy पहले की, like वो जो ancient times थे तभी से. So she always needs some like attachment, some appreciation. And second thing, like fourth last thing I'll say, set the boundaries. True. How you can set the boundaries is by communicating. True. Boundaries मतलब एक wall खड़े करना नहीं होती है. Boundaries मतलब एक छोटी सी लाइन क्रिएट करना होती है जो आपसे पूछे बगैर कोई क्रॉस नहीं कर सकता. True. Right? So, and like you have to
अंडरस्टैंड कि हम दोनों के बीच में कॉमन एक्टिविटीज कौन सी है. सपोज शी True. लाइक्स टू डू कटिंग, तो आई से ओके ममा आप कटिंग कर लो, मैं कुकिंग कर लेती. True. दिस इज द बार्टर सिस्टम. Understand. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ठीक है उनको क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है. अल्टीमेटली यू बोथ आर द वन, यू हैव टू चेक फ्रॉम योर होम कि ठीक है हम दोनों की ऐसी क्या चीजें हैं जो हम दोनों करेंगे तो लाइफ विल बी वेरी स्मूथ. True. ओके, लाइक अगर आपको लगता है कि मेरा बहुत ऐसे रिलेशनशिप वर्स जा चुका है and I cannot alone maintain that, or I cannot go with that thing for a longer period of time, seek for help. True. Seek for help. There are enough coaches, relationship coaches, or enough like people who can help you professionally. True. Because आप Very एक true. एक्सटेंड तक कर सकते हो जितना आपको एक्सपीरियंस है. True. Right? There are enough techniques available. There are like help nowadays. पहले वो चीज True. help नहीं होती थी, but True. now in the modern world we have hopefully the help also. True. Very well said. And in this situation, what I can tell you is the most important thing. What I feel is that I have learned from my mentor. That is E plus R is equal to O. Oh, That means yeah. our event plus event is, we can change the event. Like we Yes. have, if we have a Agree. toxic family member, toxic mother-in-law, we have to accept that this is an event. Now it's all about that how we respond, right? Yeah. So Yeah. the way we respond, the way we get the outcome, right? Yeah. Like for example, in this Agree. situation that you said that that your mother-in-law has opened your wardrobe without asking and all. What I feel that in this situation, but most of the women, this mother, the daughter-in-law, what they don't have guts to talk, but they are creeping in their head, Yeah. and they are sending a lot of negative vibes to the mother-in-law. And this vibration, this energy also matters a lot. That Lord. everyone need to understand. It's all about our energy. It's all about our vibration. It's all about the way. It's not about what we're talking. It's all about what we're feeling. Feeling. So Yeah. feeling is also, I believe, is the most important thing. And I have observed it very closely, because just because of what you said, that hierarchy, because like not only the mother-in-law, like in office, like boss, like we a lot of time we have to do something for the boss, same like we have to do something for the mother-in-law, because mother-in-law also a boss in the house. But, So yeah. we are doing that, but we are not doing it in a happy Right. mode. We are Yeah. in a good way. We are doing, but we are just cursing her or something, like we are just inside we have a poison. Yeah. So don't Yeah. do that. I really feel that because that I have changed when I have done the mindset. I have learned from this my coaching, and I took the help from my mentor. I have changed this mindset, and that's the reason I feel that it is very easy. It's not very difficult. But yes, you are absolutely right. The right mentor is required. Right community is also required, because generally what happens, 90% people around us is like negative people. They are always ready to pull you down and all that. And that time we don't have that kind of courage to accept even. But when you are in the positive surrounding, positive people, good mentor who can handhold you, then automatically you can get the strength to response rather than react. Because I remember that why I have into this self-development journey, because of this issue only, because I always had an anger issue, right? I always react, especially with mother-in-law, office also, or the boss. And then when I learned from my mentor, when I was in a good community, then I have changed myself, and then only I have decided that if I can change, other can also change. Only they need a support, only they need a handhold, the care, the love, the affection. So that's the role of the coach. And you have very well said that it is very, very important, right? So as a relationship coach, as a life coach, so what advise you, what techniques, like few of the techniques if you can share to implement, especially with the toxic mother-in-law, not like like those are good. Obviously we know that if you're good, obviously you need to do something good, love them, or do something good, like that. But there are a lot of toxic or tough people. It will be difficult to adjust. So can you share some kind of technique or tools and technique, so that maybe the audience can get help to how they can manage their relationship with their mother-in-law?
I speak from my perspective also, and I'll speak from my experience also. So very first thing, I was like there into a toxic relationship. So like every time my mother-in-law like never wanted me and my husband to go out alone, like Okay. we don't have the me time anytime. So if we go, so she'll say कि हाँ मैं तो घर पे हूँ ही नहीं ना. तो I used to wonder कि इनको ऐसे क्यों लगता है, like what is the reason behind it. And always वो कोई भी चीज होती है ना, तो understand कोई भी चीज पैटर्न फॉलो करती है. तो वो उनका पैटर्न हो गया था, वो उनका रूटीन हो गया था, वो उनकी वो चीज हो गई थी कि वो हमेशा से वही चीज करते थे. एंड आई डोंट नो उनको उसमें क्या खुशी मिलती थी और वो क्यों करते थे, बट आई अंडरस्टूड दैट शी इज इनसिक्योर अबाउट हर सन, दैट मेरा सन मेरे से अपार्ट हो जाएगा. Exactly. Okay, True. so this was my toxic experience. But after all, ठीक है, whatever the things happened, we like divorce हो गया and everything. But from that experience, I could understand that she was very insecure about herself. True. Okay, so I need to like convey this message to each and everyone whoever is listening now. Like first of all, आप जो भी communicate करते हो, first of all be very open and honest. जो आपको चीज अच्छी लगती है convey कि मुझे अच्छी लगी, जो चीज आपको नहीं अच्छी लगती है tell it very politely, because it is the way of saying. अगर मैं आपको आके like आपके रूम में आके बोल, मम्मा ये कैसे कर दिया आपने, how dare you to do this, spoiled. मम्मा कैन आई टेक योर 2 minutes. हाँ बताओ, Mm. आपने ये चीज की, मुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे हर्ट हुआ. True. वे ऑफ से राइट. True. अंडरस्टैंड दैट कि मुझे कैसे करना है. रेस्पेक्ट द like cultural and the general differences of yours and your in-laws. True. कुछ चीजें हैं जो वहां होती है आपको अच्छी नहीं लगती, कुछ चीजें यहाँ है जो ऐसी होती है जो आपको नहीं अच्छी लगती, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस. हर घर एक जैसा नहीं होता. हर घर में True. मैगी बनती है, बट वो मैगी की टेस्ट हर घर में डिफरेंट होती है. True. You Very true. prepare that same Maggie and I prepare that. No doubt there are same ingredients. No doubt there is a same Maggie. No doubt there is a same company, but still we are different. True. Accepted. So True. अंडरस्टैंड दैट Absolutely. कि मुझे जो डिफरेंसेस है उनको रिस्पेक्ट करना है, ना कि डिफरेंसेस. यू कैन नॉट डू एनीथिंग सिंपली कटिंग ऑफ. उसको कम्युनिकेट करके हम स्लो डाउन कर सकते हैं, राइट. True. True. Very true. एस्टेब्लिश द बाउंड्रीज, और उतनी बाउंड्रीज जो आप भी रख सकते हो, सामने वाला भी रख सकते हो. और बाउंड्रीज बना के हमको रखनी नहीं होती है, बाउंड्रीज बना के हमको बतानी होती है कि मम्मा मैं आपको कोई भी चीज दे सकती हूँ, बट यू नीड टू कम एंड आस्क मी कि मैं वो चीज लूं. मुझे आप बिना बोले बिना पूछे वो चीज करोगे तो आई कैन नॉट टॉलरेट दैट. True. Okay, like be grateful. First of all, ask the people who don't have mother-in-laws. True. उनको अकेले मैनेज करने में कितनी प्रॉब्लम होती है. इन केस यू हैव अ चाइल्ड, आप बच्चा देख के निकल जाते हो, निकल जाओ. True. आप संभालो. True. यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट. और True. हर चीज मेंटेन कर सकते हैं, हर चीज बनाई जा सकती है, हर चीज को आप लाइक एक इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है. ऐसे सोचते हैं कि हमारी मदर इन लॉ है तो हमारा फ्रीडम छिन गया. नहीं, आपको उनको कम्युनिकेट इसीलिए ही करना है क्योंकि उनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, राइट. आप भी उनको ये चीज दो, ठीक है मम्मा संडे को मेरा दिन है, संडे को 2 hours बेबी को आप संभालोगे. इंस्टेड ऑफ दैट मैं आपको 2 hours मंदिर लेके जाऊंगी ऑन वेडनेसडे. शील बी अरे
मैं 2 घंटे उसके बच्चे को संभाल रही हूँ, 2 घंटे वो मेरे को मंदिर लेके चलेगी, चलो ठीक है। दिस इज, यू विल क्रिएट योर बॉन्ड विथ योर मदर इन लॉ, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दैट कि अगर आपने जो भी चीज की तो शी विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। सो दिस इज द वे यू विल क्रिएट द बॉन्ड। बट हम क्या करते हैं, हम दूर होने लगते हैं, और वो चीज जब दूर होने लगती है ना तो बहुत ज्यादा गैप्स हो जाती है। वो गैप्स को फिल करना इज नॉट इजी जॉब, राइट। True. सो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है आप दोनों के बीच में, सिट, रिजॉल्व कामली। True. शाउटिंग करने से भी आप रिजॉल्व करोगे, बात करने से भी आप रिजॉल्व करोगे, नहीं बात करने से भी यू आर कम्युनिकेटिंग एंड सेंडिंग बोथ नेगेटिव एनर्जीज टू ईच अदर। और True. वो आप दोनों तो करते ही हो, बट योर होल एनवायरमेंट इज अफेक्टेड विद दैट। True. योर हस्बैंड विल Very well बी said. इनसिक्योर, आपके बच्चे इनसिक्योर हो जाएंगे, आपका घर का एनवायरमेंट खराब हो जाएगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, वो झगड़ के बैठी है, वो मुंह बना के बैठी है, उसने खाना नहीं बनाया, इसने खाना नहीं बनाया, बीच में मैं फंस गया। देयर आर सो मेनी थिंग्स। Or first of all, if you want to seek a help from anyone, I'll say go and ask the help from professionals. Because True. आजकल के बहुत आप सुनोगे वुमेन्स किटी पार्टी में जाती हैं, they'll say कि अरे हम तो किटी पार्टी में जा रहे हैं, but I'll tell you there are very few kitty parties जो enjoy होती हैं, otherwise they are only pity parties. Pity. Gossip. Gossip. गॉसिप होता है, और वो सब नेगेटिव गॉसिप होगा। लाइक एक True. भी ऐसा नहीं सुनोगे मेरी मदर इन लॉ ने पता है मेरे लिए साड़ी दी, वाओ बहुत अच्छी थी। दिल से अरे मेरी मेरी मदर इन लॉ ने पता है ऐसे किया, अरे तेरी ने भी ऐसे किया, अरे मेरे ने भी ऐसे True. किया। तो True. अंडरस्टैंड कि वो पेटी पार्टी जहां हो रही है, अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो तो कम्युनिकेट राइटली, नहीं कर सकते हो तो प्लीज बी क्वाइट। True. True. हिस्सा And ना लो वो ज्यादा avoid. अच्छा। And यस, avoid. That is more important अवॉइड than इट, avoid this kind of या negative surrounding. अवॉइड इट, बिकॉज आपको वो लॉन्ग रन में हेल्प नहीं करेगा। True. अगर आपको बनाना है तो गिव सम टाइम, द रिलेशनशिप रिक्वायर्स टाइम, एनर्जी, True. इट हैज टू मेंटेन इट। ऐसा नहीं होगा कि ठीक है आपने आज बोला और आज बन गया और हो गया बन गया, नो, you have to always nurture it. Relationship is something you can relate with a plant. True. Plant True. को sunlight भी चाहिए, like all things are very needed in raising a plant. अगर आपको एक plant को बढ़ाना है, उसको आपको sunlight भी देना important है, पानी भी देना important है, True. लाइक उसके लाइक देर आर सो मेनी थिंग्स। वो आप देखते हो जब एक छोटा सा प्लांट ग्रो होता है, जब उसको वो ऐसे टेढ़ा होने लगता है तो उसको एक सपोर्ट लगती है, आप उसमें एक स्टिक डालते हो ताकि उसको सपोर्ट मिले, ताकि वो प्लांट खड़ा रह सके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो इट रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट, एनर्जी, एंड कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आपका सपोर्ट कौन बन सकता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मेरा सपोर्ट मदर इन लॉ बन सकती है, समटाइम्स स्पाउस बन सकता है, समटाइम्स कोई फ्रेंड बन सकता है, समटाइम्स कोई सिस्टर बन सकता, कोई भी आपका एक सपोर्ट बन सकता है। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प तो एक कोच आपकी इतनी हेल्प करेगा, बिकॉज आप अल्टीमेटली एक रिलेशनशिप के लिए हेल्प लोगे, लेकिन वो एक रिलेशनशिप तो नहीं बनेगा, बट देर इज लाइक कंप्लीट एनवायरनमेंट आपका चेंज हो जाएगा। True. True. ऐसा Very नहीं है well कि said. सिर्फ एक चीज बन जाएगी, एक चीज True. की वजह से आपका सारा एनवायरनमेंट बन सकता है। अगर Very well. आपके घर में आप किसी एक वुमेन को रेस्पेक्ट करते हो, वो वुमेन जाके दूसरी वुमेन को रेस्पेक्ट करेगी, दैट इज 100% श्योर। अगर True. आपके घर में आप अपनी लेडी को, अपने घर में आपकी मदर को, सिस्टर को, डॉटर इन लॉ को, किसी को भी रेस्पेक्ट नहीं करते हो, इसका मतलब
यही है कि आप वुमेन्स की रेस्पेक्ट नहीं करना जानते हो और वो वुमेन आपके घर को कभी खुश नहीं रख सकती. दैट्स अ हार्ड कोर ट्रुथ. जितनी जल्दी समझ जाओ दैट इज वेरी ट्रू. बिकॉज Very एक true. हैप्पी मदर एक हैप्पी फैमिली को बना सकती है और अगर मदर हैप्पी नहीं है तो वो फैमिली कभी भी हैप्पी नहीं हो सकती. ट्रू ट्रू. तभी तो कहते हैं ना, एक लड़की घर जोड़ भी सकती है और एक तोड़ भी लड़की सकती घर है. तोड़ भी सकती है. Okay, so I would like एग्जैक्टली. to thank, yeah, I'd like to thank all those who have joined us. If you have any question related to this, sensitive issue of, managing with your mother-in-law, please feel free to ask more and more questions. I believe few have asked, we have got few questions. So let's, resolve that question first. I think someone has asked some question, but I don't know why. Oh, now it's coming. Okay. One person is asking one question. You are talking now. You didn't talk those things at that moment. Like I my believe she's yeah. my mother. Okay. So she is telling that you are talking these things now, but at the time when we needed to communicate that was the time I couldn't ask that thing to my mother-in-law. That Okay. okay, you cannot touch that ball drop or something. Okay. So that is the communication going on. Okay, thank you. Okay, so thank you so much all those who have joined. Namita, Manish, Vikas, Bhatia, thank you so much. Nitin, a lot of people have joined. So if you have any question, please feel free to ask any question. So Aarti, in this situation, in this toxic relation, what I feel the most important thing is, I think, how you have a relationship with your husband. Because, every parents want their, like, especially mother, want their son need to be very, very happy. So I personally, I can, based on my own experience, but I feel that, there are a lot of, girls, they are more into, people pleasing, especially pleasing their mother-in-law, ki mother-in-law khush rahe, mother-in-law khush rahe. I'm not saying you don't care them, of course you have to care them, but what I feel that strongly, mother-in-law, like, जितना कर सकते हो उतना करो. Like, अगर बहुत ज्यादा वो expect कर रहे हैं तो हाँ में हाँ मिलाओ, मगर करो वही जो आपको करना है. It's not like कि एकदम डूब जा रहे हो उनके ही सब करो. Better to make the relation very beautiful and very strong with your husband, because when your mother-in-law see your son, her son is very happy with the girl, like with the daughter-in-law. I believe relation become more automatically more better with the in father-in-law and mother-in-law. So this is my personal experience, because initially my mother-in-law was always been very toxic and always been, very, very like manipulative and lot of like interference and all that. So instead of focusing on her, I focus my husband. Like, I want, because we have an arranged marriage, so I focus on my husband to know him well, to understand him well. I try to learn a lot of love language, and I've experienced lot. Implemented a lot of love language with my husband, with my mother-in-law also. That to understand them, and automatically our relation become good, because I have more focus on my relation with my husband. So this is also one technique that you can use, that build a more better relation with the husband, then automatically the in-laws, because obviously in-laws purpose is their son need to be happy. They are more protective for their son rather than their daughter-in-law. Yeah. Right? Yeah. So that is my I think about this. What do you think about you agree with this, or any other comment you have on this? I totally agree with this, but I have some other perspective also to share. Like, ऐसा होता है कि mother-in-law को हमेशा ऐसा होता है कि like मेरा बेटा खुश होना चाहिए, but at times they feel कि like ठीक है daughter-in-law happy है तो it's okay, but उनका focus सिर्फ like उनके son पे ज्यादा रहता है, right? तो understand कि अगर आप एक अच्छी डॉटर इन लॉ बनते भी हो, ठीक है, अल्टीमेटली उनकी खुशी उनके बेटे से ज्यादा होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि ठीक है उनका बेटा हमेशा खुश होना चाहिए. एंड द थिंग यू सेड इज ऑलवेज पीपल प्लीजिंग. कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लाइक हमेशा उनको ना पीपल प्लीजिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है. लाइक
हर चीज में लाइक मुझे कोई प्लीज करे, हर चीज में मुझे कोई लाइक आगे पीछे बोलता रहे, तो हर चीज में वो चीज पॉसिबल नहीं होती है. True. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मैं हर टाइम एक इंसान को प्लीज नहीं कर सकती, और कर भी सकती हूँ इन केस, तो एक एक्सटेंड तक, एक लिमिट तक. ठीक है, आप हर बार उस इंसान को खुश रखने के चक्कर में सबसे ज्यादा दुखी आप होते. ओके, बिकॉज मैं हमेशा सोचूंगी कि अरे मेरी मदर इन लॉ बोल रही है आज दाल राइस बनाओ, तो चलो मैं दाल राइस बना लेती हूँ. अच्छा, आज मेरी मदर इन लॉ बोल रही है मेरे साथ मंदिर चलो, तो चलो मैं मंदिर चली जाती हूँ. अच्छा, आज मेरी मदर इन लॉ को ये चाहिए कि उनकी फैमिली में कोई फंक्शन है, आज मैं वो भी अटेंड करूँ, तो चलो मैं वो भी अटेंड कर लेती हूँ. अच्छा, आज मेरी मदर इन लॉ को चाहिए कि मैं अपने बच्चों को जू लेके जाऊं, तो चलो मैं वो भी लेके जाती हूँ. ऑलवेज लाइक वो हमेशा एक पैटर्न बन जाता है, और फिर उनको वो यूज कर लेते हैं उस चीज का. रादर देन रिस्पेक्टिंग यू, वो एक पैटर्न फॉलो हो जाता है, और फिर आप खुद ही एक दिन सोचते हो ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो ऐसे कभी नहीं किया, मैंने तो ऐसे कभी नहीं सोचा था. अरे यू आर द वन गिविंग द परमिशन एवरी सिंगल टाइम. हर टाइम आपने उनको अथॉरिटी दी है हर्ट करने की, तो वो हर्ट तो होगा ही, बिकॉज आपने हमेशा से अरे प्लीज मम्मा मान जाओ, प्लीज मम्मा ये कर दो. हाँ, यू हैव टू डू इट, बट व्हेन यू सी कि वो चीज हमेशा हो रही है, वो चीज का एक पैटर्न हो चुका है, वो चीज ने एक लूप कर लिया है, आपको वहां स्टॉप होना है और वो चीज कम्युनिकेट करनी है. एक्सक्यूज मी, आई कैन नॉट गो अहेड विद दिस थिंग एवरी सिंगल टाइम. और वो आप जो सोच रहे हो आपको कम्युनिकेट करना है. सी, हस्बैंड से बात करने का भी एक वे होता है. ओके, अगर मैं हमेशा उसकी मॉम को एक टारगेट बना के चलूंगी, तो देयर विल बी अ टाइम ही विल से हाँ हमेशा देखो मेरी मॉम से ही प्रॉब्लम है. ट्रू, राइट, हमेशा तू मेरी मॉम की चुगली लेके ही मेरे पास आ जाती है. एंड लाइक उनको हमेशा यही लगेगा कि अरे यार हमेशा इसको मेरी मॉम से क्यों प्रॉब्लम है, हमेशा इसको इसी चीज से क्यों प्रॉब्लम होती है. जो भी मेरी मम्मी करती है, अच्छा करती है तो भी इसको प्रॉब्लम होती है, बुरा करती है तो भी इसको प्रॉब्लम होती है, आखिर इसकी प्रॉब्लम सिर्फ मेरी मॉम ही है. राइट, तो आपको ये चीज समझनी है कि आपको उसकी मॉम को एक टारगेट ऑडियंस करके नहीं बनाना है. यू हैव टू लाइक कम्युनिकेट वेरी क्लियरली कि उन्होंने ये चीज की, दैट वाज अगेंस्ट माय रूल्स और दैट वाज अगेंस्ट माय वैल्यू सिस्टम, तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी. ट्रू, राइट, सो एक्सेप्ट द पर्सन एज ही इज. यस, एक्सेप्ट, बिकॉज कोई कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है. दे आर वेरी वेरी हार्ड रॉक पीपल. वो इतनी जल्दी इजीली आप नहीं तोड़ सकते. There is Namita. I have stopped people pleasing. I have stopped thinking about what she thinks about me, and I have better relationship with my husband. Great, Namita. That is very true. But you are focusing on your husband, but I'll say that you have to be better relationship with your mother-in-law also. And there is wellness with Yatri. Yatri has question. Always speak bad and taunting about the gold my family has given at the time of our marriage. It's been 9 years, but still she says the same. She expects a lot from my family, but when it comes to giving, she always refuses and insults. So how should I respond? He's asking how to respond. Yeah, so you have to understand that there are some people जो उनकी हैबिट होती है, ठीक है, कि आप कितना भी कर लो आप उनको खुश नहीं रख सकते. तो आप ना उनको अपनी हैप्पीनेस वाली लिस्ट से निकाल दो. ठीक है, आप हर टाइम उनको पीपल प्लीजिंग करके आप अपने आप को हर्ट करोगे, एंड यू आर नॉट हियर टू हर्ट योर सेल्फ. सो आई विल से आप उनको अपनी लिस्ट, हैप्पीनेस वाली लिस्ट से निकाल दो. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज नाउ अ डेज आपको खुद को पता होगा कि
डाउरी एंड ये सब चीजें कितनी रेस्ट्रिक्टेड हैं. सो अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट इट वेरी क्लियरली कि मेरी शादी हस्बैंड के साथ हुई थी. देयर वॉज नो एनी सच कमिटमेंट कि मेरी फैमिली को इतना ही गोल्ड देना है. अगर आपको इतना ही गोल्ड इम्पोर्टेंट था तो you would have communicated at that time. There is no use of it taking this thing at this moment after 9 such a long years. True. True. See, I would like to answer this to Yatri that when like obviously toxic people what they expect that they expect कि हमारे हाँ में हाँ मिलाओ, right? हमारे जो हम बोले वो करो. But what I feel कि हाँ में हाँ okay करो. And second thing is that we need to start being very, I'm not saying ignoring, but be more cold when like instead like you can't sell ice cream to everyone, right? You can't be always make everyone happy, but at the same time because you are in the same house, so instead of ignoring or instead of abusing or something like that, always say okay, I'll do this, always I think and whatever is you are saying, comment and all, but at the same time do which you wanted to do rather than only listening to her or in getting hurt by her saying by her like don't go for victim mode. That exactly I would like to say, don't go for victim mode, right? Namita has written when she had to marry his younger son, she was very nice to me. Was surprised with her behavior and now she is her original form. Now I understood that I was befooled by them. But it's okay. I did my best what I could do at that moment. I'm happy and I'm proud of myself. Great, Very great good. Namita, that you did whatever you felt it. That is very important because ultimately हम अपने आप को खुश रख सकते हैं. That is very important because आपको किसी और को खुश रख के अगर आप वो चीज में आप hurt होते हो तो that is very wrong and that is not acceptable. So understand that your happiness is much more important. And second thing, whatever is hurting you or whatever has hurted you in past, if you didn't communicate, I highly recommend वो communicate करके clear करो. But again, if you don't communicate, वो चीज आपके subconscious mind में वो hammer करती रहेगी कि I did this thing, but she didn't, I did this thing. So stop that fight and communicate it and clear it out, that thing. Yeah, that's why she is reading. That is what I did. Removed her from my happiness list. Point to raise. Yeah. Yeah. Yeah, thank you for asking questions. Anyone, Yes, thank guys, you if so you much, have any Yatri. questions, so please Yeah. put your questions in the comments so we can have your answer for you. Yes, Yatri is saying thanks, Aarti and Arpita. I can speak this for sure. It's very important point to raise. Thank you, Yatri. Please do. And please do We'll that. say highly recommend. Communication is the way of dealing every. Sorry, I banged my phone. That's okay. It's okay. Yes. Yeah, so I'll highly recommend that कोई भी चीज without communication एक आपके सर के ऊपर बोझ बन जाती है. So don't take that luggage into your head and go ahead with that luggage because एक extent तक आप आके थक जाओगे. वो luggage लेके there is a too much of luggage overload on your head and this thing goes on and एक way पे आप आके थक जाओगे. You will stop. True. So don't create that stopping path. आप अपने लिए एक रुकावट ना बनो और कम्युनिकेट करो जो भी चीज है. सी आप अगर आप अपने अंदर कुछ चीज रखते हो, ठीक है, तो वर्स्ट थिंग इज यू आर हर्टिंग योरसेल्फ. ठीक है, अगर आप कम्युनिकेट करते हो यू आर फ्री. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंड दैट कि मेरा कम्युनिकेट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. True. डोंट सी फॉर द कॉन्सिक्वेंस कि अरे मैंने किया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा. अगर सब कुछ आप ही सोचोगे तो व्हाट द अदर पर्सन विल थिंक, उसका भी टेंशन आप ले रहे हो. True, very true. That's why I always using that gray rock technique that I shared. Gray rock technique is a very good technique that don't ignore, don't revert back, don't do anything. Just say okay, but do that thing which you wanted to do.
So that is very important when you have this toxic relation or something. So Aarti, would you like to recommend any kind of book which you have read related to relationships, especially the mother-in-law? Any book you want to recommend to audience? See, I highly, first of all, say every relationship is unique. Okay, the experience which you had and which I have is very different. So I will not say that okay कि हर चीज आप पे एप्लीकेबल होगी या हर चीज वो सेम मेरे पे एप्लीकेबल होगी, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, मेरी लाइफ में कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं. आपकी सिचुएशन क्या है, आपके फेवर में कौन कौन है मुझे नहीं पता, और मेरे फेवर में कौन सी चीजें हैं. समटाइम्स हम ना कम्युनिकेट ही नहीं करते अच्छे से. अपने अंदर ही घुट घुट के जीते हैं. यस, घुट घुट के जीते हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं करते. यस, वो घुट घुट के जीना बंद करो और अच्छे से जीना स्टार्ट करो. अगर कोई आपको रिलेशनशिप में, कोई भी फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो, जहां आपको लगता है मेरी वैल्यू की वैल्यू नहीं की जा रही है, मेरी रेस्पेक्ट नहीं की जा रही है, सो स्टॉप दैट. वो चलाने के लिए उसको घसीटना है, चलाने के लिए उसको चलना है करके नहीं चलो. इट्स जो चीज पॉइजन है तो उस चीज को स्लो पॉइजन करके क्यों पीना है. पॉइजन तो पॉइजन ही है. आज पॉइजन नहीं दे रहा है कल देगा, कल नहीं दे रहा है परसों देगा. ओके, so there is a one book, Toxic In-Laws. Like it's a strategy of protecting your your marriage. So one book is you can go with that. And second thing, if anything is there, you are facing any, like you want to rebuild your relationship, any relationship is going down with your partner, so I highly recommend my book, Rebuild Relationships. So understand that. And मदर इन लॉ मैनुअल बुक है एक, उसमें आपको एक स्ट्रैटेजीज दी गई है कि हाउ यू कैन go ahead with your mother-in-law. So how you can set the boundaries, what the rules for the mother-in-law, what are the rules for a daughter-in-law, ऐसी भी strategies है उसमें. And how you can build the positive connection with your mother-in-law. Wow. So see, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप किसी भी वे में हेल्प करोगे. अगर आपने माइंड में ये सोच लिया है कि मेरी मदर इन लॉ ऐसी ही है, so I'm sorry guys, there is a very bad news for you. आप उस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जा सकते. True, very true. First thing I'll say, like books, ये वो सब चीजें बाद में आती है. First is your mindset. Second is what you think, what is your thought on that. आप क्या चाहते हो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर मैं बाहर से दिखाऊं हाँ मेरे को तो सोचती हूँ मैं भी मेरी मदर इन लॉ अच्छे से बात करे, बट इनसाइड दैट ये तो ठीक है, मैं तो उसके लिए ही चाहती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बात ही नहीं करनी है उससे. सो डोंट बी इन द टू जोन्स. ठीक है, आप कम्युनिकेट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंडसेट चेंज करो दैट वो मेरी मदर इन लॉ है, माननी है नहीं माननी है, मानते हो, like whatever the thing is there. So first of all change your mindset. Second thing, change your like thought process also. कि okay उन्होंने क्या किया, sit and analyze that कि उन्होंने वो decision लिया मेरे लिए, क्यों लिया. शायद उन्होंने सोचा होगा मेरे. अगर आपको समझ में आ रहा है फाइन, नहीं समझ में आ रहा है तो I'll say go and ask her कि ये चीज आपने डिसीजन लिया बट क्यों लिया, कैन आई आस्क. Don't go in a harsh way. ऐसे कैसे आपने मेरे लिए डिसीजन ले लिया. Respond and react. There are two different things. So there are two different things. आप उस चीज को समझो. आप बोलोगे कि मैं हार्ड वे में बात करूंगी तो आपको रेस्पॉन्ड भी हार्ड वे में मिलेगा. अगर आप प्यार से बात करोगे तो आपको रेस्पॉन्ड भी. वन डिस्क्लेमर हियर, प्लीज डोंट से कि अरे मैंने तो प्यार से बात की पर फिर भी मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे बात की. There are some exceptional cases. Yes, understand that every mother-in-law is not coming from a heaven place. जैसे नहीं होती ना, पांचों उंगली एक जैसे नहीं होती. Yes.
Yes, that's true. So, Aarti, so now very less time we have. So let's conclude this talk. What I feel in the conclusion of how to manage your relationship with mother-in-law specifically is, of course, first is accept her as she is, and second, like obviously you can help her, you can everything you can do for, but don't go for pleasing her, Yeah, because you can't please anyone in this world. yeah, And most important thing is that self love, like develop the self love, develop the value. Like when you value yourself, then only other will value you. That I yeah, believe that conclusion is. What yeah. your conclusion on this? I'll conclude this thing with this. First of all, you have to change your mindset. Okay, Yes. कि ये चीज कैसे हैंडल होगी और हैंडल करनी भी है या नहीं. There are two different True. things. Okay, True. and second thing I'll say, communicate. Okay, communicate the clear way and with a respect, genuineness, honesty, all things included. And third, I'll say that set the boundaries, set healthy boundaries which you can also maintain it. और True. वो बाउंड्रीज बनाओ जो आप कम्युनिकेट करो. बिकॉज आप True. बोलोगे कि मैंने तो बाउंड्री बना ली, ऐसे कैसे उसने क्रॉस कर ली. आपने कम्युनिकेट किया कि ये True. चीज नहीं होगी या ये चीज मैं नहीं करूंगी. सो डोंट True. कम एंड से कि वो चीज नहीं हुई. अंडरस्टैंड कि communication is the very key, like it's a key to success for your relationship, I'll say. True. Wonderful. So It was you have to beautiful maintain talking. this thing to your husband also, कि अगर मेरा husband सब चीज समझ सकता है तो like I have also the same thing for him. मुझे भी उसकी सब चीज समझनी है. And every marriage में like the guy will ask you, आप मेरे पेरेंट्स के साथ रहोगे, आप मेरे True. पेरेंट्स को एक्सेप्ट करते हो, मेरी मदर ऐसी है, मेरी मदर ऐसी है, जैसी भी है आपको एक्सेप्ट करनी है. सो True. अंडरस्टैंड दैट योर पार्टनर, जिस तरह आपकी मॉम इम्पोर्टेंट है वैसे उनकी मॉम भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. Important है. True, very true. Lovely talking with you, and you have such a great advice you have given. It was really, really wonderful talking with you. And I also like to announce one thing, that I have started one very beautiful design wisdom hub, where a lot of challenges I'm throwing, and a lot of people are enjoying those challenges, and a lot of activities like interview, book review, and a lot of things. So if anyone is interested to join my wisdom hub, which is free of cost, I'm not taking any charge, so they can DM me so that I can join them. They can join them in my group also. And thank you so much, Aarti. It was really, really lovely talking with you. All the best for your beautiful journey that you're doing. Many more, success you can get in your life. I really pray to God that you can be very successful life and relationship coach. And thank you so much, Thank dear. you It so was really much. pleasure Big talking to you. gratitude to you for inviting me to your channel. I love you all. So whoever joined it, thank you so much. And you all, the beautiful questions you asked, thank you so much for that. I am doing every Sunday Insta live on my page 7 p.m. So if you want to really deep dive down with your relationship, so please join me or you can DM me. And thank you so much for bringing up this core mother-in-law topic, Arpita. Love you a lot. Thanks. More power to Love you too, you. dear. More Lots of power to you also. love. Yes, lots of love. Yeah. Thank you so much. Thank Thank you so you. much, Bye. everyone. Take care, Thank you, everyone. everyone who Have has a good joined. Love day. you. Yeah. Lots of love to everyone. Thank you, dear. All the best. Bye Bye. bye.